Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. It's class 12th, subject economics, and the topic which continues here is the central problems of an economy. In the last lecture, I give the introduction about the problems which any economy faces, and today we will discuss these fundamental problems which any economy has to tackle one by one. Dear students, the first and the foremost problem which an economy faces is what to produce. यानी कि एक मुल्क सारी चीज़ नहीं बना सकता है क्योंकि जो इसके पास वसाइल होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. So a country has to make a choice between different goods and services. Once for these goods which society decides not to produce will remain unsatisfied. Thus the question of selecting goods for production implies which wants should be satisfied and which one to be left unsatisfied. If society decides to produce a particular good in large quantity, it will then have to withdraw some resources from the production of other goods and devote them to the production of goods which is to be produced more. For example, हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोविड-19 पेंडेमिक से जूझ रही है. तो इस पेंडेमिक का मुकाबला करने के लिए इस वक्त हमें दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी के बजाय अद्वियात या इस डेडली वायरस के वैक्सीन की ज़रूरत है. तो एक मुल्क अब अपनी बजट के दौरान दूसरे अखराजात काट कर इस पेंडेमिक का इलाज ढूंढने में करेगा, जिसकी वजह से आवाम की कई ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकेगी because of the limited resources. And the second most problem which any economy faces is how to produce. यानी कि अगर हम कोई चीज़ या मुल्क में जो चीज़ें पैदा हो रही हैं इसके लिए हम कौन से टेक्निक्स इस्तेमाल करें. क्या हम इसके लिए ज़्यादा वो टेक्निक्स इस्तेमाल करें जिसमें मैन पावर ज़्यादा लगता है, यानी वो टेक्निक्स इस्तेमाल करें जिन टेक्निक्स को मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है, या वो टेक्निक्स इस्तेमाल करें जिनमें मशीनरी का इस्तेमाल होता है. दिस इज़ ऑल्सो एन अनदर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल, cloth can be produced either with automatic loomers or with power loomers or with hand loomers. Similarly, fields can be irrigated by building small irrigation tube wells and tanks or by building large canals and dams. Therefore, it has to decide whether cloth is to be produced by hand loomers or by power loomers or by automatic loomers. Similarly, it has to decide whether irrigation has to be done by small irrigation works or by large canals. Obviously, it is a problem of choice of production techniques. Different methods or techniques of production would use different quantities of various resources. For example, the production of cloth with hand loom would make use of relatively more labor and less capital. Production with automatic loomers is therefore a capital-intensive technique of producing clothes. Thus, a society has to choose whether it wants to produce with labor-intensive techniques or with capital-intensive methods of production. And the third problem which any economy faces is the distribution of national product. This problem of sharing of national product among various
individuals and classes in the society. This is a big question, or we can say it is a challenge before the economists. The question of the distribution of national product has occupied the attention of economists since the days of Adam Smith and David Ricardo, who explained the distribution of national product between different social groups such as workers and capitalists in a free market society. Therefore, this is another challenge before any economy. यानी कि जो एक मुल्क के पास नेशनल प्रोडक्ट होता है उसकी शेयरिंग जो होती है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक मुल्क के सामने. एंड द फोर्थ प्रॉब्लम विच इन इकोनॉमी फेसेस इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी. क्योंकि जो हमारे पास वसाइल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो तो लिमिटेड होते हैं, उनका किसी भी सूरत में ज़िया नहीं होना चाहिए, वो ज़ाया नहीं होने चाहिए. So it is desirable that they should be used efficiently. It is therefore important to know whether a particular economy works efficiently. In other words, whether the production and distribution of national product decided by an economy is efficient. Having asked what and how goods are being produced and how the total national income is distributed, it is but proper to ask further whether the production and distribution of this national income are efficient ones or not. The production is said to be efficient if the productive resources are utilized in such a way that through any reallocation it is impossible to produce more of one good without reducing output of any other good. This is another challenge before any economy. And the fifth problem is the problem of full employment of resources. क्योंकि रिसोर्स की लिमिटनेस की वजह से whether all available resources of a society are fully utilized is highly satisfactory question, because answer to it would determine whether or not there will exist involuntarily unemployment of labor as well as of capital stock. In view of जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि रिसोर्स की लिमिटनेस की वजह से to satisfy all wants of people, it may look strange to ask a question whether or not all available resources of a community are being fully employed. जैसा कि आपको समझ आ रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास, यह हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, अगर कोई चीज़ हमारे पास कम होती है तो हम उसका ज़्यादा, यानी कि हम उस चीज़ की ज़्यादा कदर कीमत करते हैं, उसको बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं. तो यही क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. Thus, the proper employment of these resources is another big question. Thus, any community will not consciously allow these resources to lie idle. ये कोई सोसाइटी नहीं चाहेगी, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड हैं, कि इसके रिसोर्स कुछ बेकार रहें, इस्तेमाल में ना आए, तो ये कोई एक सोसाइटी नहीं चाहेगी. सो द प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज अनदर क्वेश्चन बिफोर एनी इकोनॉमी.
एंड इसी तरह हमारे पास और एक प्रॉब्लम जो है वह है द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.